So let us begin our class for the year 2021. Our first class is there, huh? First of all, Happy New Year to everyone, to all of you. So now let us start with it. Happy New Year. I will write it for you. It's 2021. अच्छा मैं ना इस क्लास में तुम लोगों को ना कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताता हूँ पहले अबाउट दिस ईयर 2021. Some very interesting facts are there. See, just try to split this number 2021. If you will add 2 plus 0 plus 2 plus 1, see what you are getting. 2 plus 2, 4 plus 1, 5. And 5 is a prime number. Is it correct now? 5 is a prime number. Yes, sir. Then, Yes, sir. then, Yes, sir. then do what? See, just take this 2 plus 0 plus now take, we have taken these 2 and 1 separately. Now take them together. 21. Now, see, 21 plus 2. How much we are getting? 23. Is it also a prime number? Yes, it is Yes. also Yes, a prime sir. number. है ना? Yes, Then, see, 2, okay, take it 20 plus 21. See, अब मैंने क्या किया इस 2 और 0 को भी कंबाइन एंड देन अगेन वी आर गेटिंग 41. 41. Again we are getting what? A prime number. है ना? Prime number, sir. See, these are the things. See, 202. Suppose I am taking these 3 digits together. I am taking 202 and then I am adding 1. Then I am getting 203. Again I am getting what? A prime number. See, every combination I have tried. कितने combination try किए and I am getting every time I am getting a what? Prime number. So what? Isn't it amazing? Our year is starting. 2021. This year is starting and we are getting a ह्यूज कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम दिस ईयर. बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्राइम नंबर्स हम लोगों को यहाँ पे मिलते जा रहे हैं. सो दिस इज व्हाट एक्चुअली मैथ इज. यू जस्ट फाइंड आउट. सी, मैथ इज एवरीवेयर. जहाँ पे भी तुम कोशिश करते हो ना, मैंने तुम लोगों को एक बार बताया था. आई टोल्ड यू अबाउट माई बर्थ डेट 24/7 है ना, 24th July. सो इट इज ऑल्सो वट? इट इज अ प्राइम नंबर. सॉरी, इट इज वट? It is means always available in mathematical terms if we write. So these are the things. Try to search, try to find out the things everywhere. Maths is there, है ना. जहाँ पे भी तुम सोचोगे ना, maths हमेशा मिलेगा. So there are many combination for this year. You will find. Try to find out. Next class we will discuss. हम और चीज़ें discuss करेंगे अगर तुम लोग कुछ find out करोगे ऐसा कुछ. Okay. So let us start with our topic for the class, that is perimeter and area. Okay, so let us start with it. Perimeter and area. देखो, हमने ना we have discussed about different kind of shapes in this chapter. हमने अलग अलग टाइप की shapes के बारे में पढ़ा. We have discussed about square, we have discussed about rectangle, we have discussed about circle हमने डिस्कस किया. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट अ सेमी सर्कल. ओके, सो इफ आई ड्रॉ अ सेमी सर्कल, पैरेललोग्राम, समथिंग थोड़ा सा ये, it is not like that. And we have discussed about parallelogram also. So if I'll draw a parallelogram, see this one, a parallelogram we have discussed. triangles, है ना, we have discussed about triangle, correct. So different kind of shapes we have discussed, huh? So first for square we have discussed when we have to find out the perimeter, the formula is 4 into side. If we need to find the area, the formula is side into side. This is for what? This is for square, when we are finding for square. Now if we are finding for a rectangle, suppose this rectangle I am finding and I need to find its L into B. yes, if I need to find its perimeter, that means it will be 2 length plus breadth, and if I need to find its area, it will be L into B. To B. Then for triangle I told you for different kind of triangles, है ना. Suppose all the sides are equal, suppose this is A, this is A, this is A, then it will be A plus A plus 3 into A. side. But if all the sides are unequal, suppose this is A, this is B, this is C, then A plus B plus C, like this. Then for circle I told you, see this is the radius. Then for circumference is what? Circumference is the perimeter of a circle. That means it is 2 pi r.
and Pi r. if we are finding its area, it will be how much? It will be Pi r pi r square. square. Then Pi r for square. parallelogram, if we are finding, suppose this side we are taking as A, this side we are taking as B, and you know in parallelogram the opposite sides are equal, so this will also be A, this will also, so if we are finding the perimeter, that means perimeter it will be 2 times A plus B, something which times look A plus like, B. yes, something which look like as what? It look like as the perimeter of a rectangle. Rectangle. And when we are finding its area, area is what? Base multiplied by height. And Base into height height. is what? This is the height of a parallelogram. See this one, the perpendicular from a vertex to other side. And same in case of triangle, if we are finding the area, we are using the formula area equals to half into base into height. So these are the things we have discussed in this chapter till now. अब तक हमने जो डिस्कस किया है ना वो यही था, हमने हर एक टाइप, अलग अलग टाइप की शेप्स के बारे में पढ़ा. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स, अबाउट देयर पेरीमीटर, अबाउट देयर एरिया. सो नाउ we will be doing some application based question. Now let us see some application based question. See, suppose I am giving you a question. Suppose we are discussing about some application based question. Application is what which we see in day to day life, है ना, some application type questions are there. Suppose we are having a rectangular table, this green one, if I am naming it as A, B, C, D. This is a rectangular table I am having, A, B, C, D. And you know what? This circular part of this rectangular table, this rectangular table is having a circular part in between which is of blue color. हाँ, जो ये वाला जो कलर है करते हैं हम इसमें, this circular part is of blue color and it is having the radius, this one 7 centimeter, and our rectangle is having the length, suppose it is having the length 20 centimeter and breadth is 12 centimeter. So if someone is asking you that you have to paint the part of the table that is not inside the circle, you have to paint the outer part, you have to paint the part of the table that is not in circle. So how you will be finding? You have to find this one. Suppose you are painting this one, okay, if you are painting the table, then how you will be finding? If you are finding the area of this pink color, area of pink color part, you are finding this one na, only area of this pink color part. ये pink वाला कितना है? What you will be doing? तुम simple सा कि area of rectangle you will find and minus area of circle. सर्कल के एरिया को माइनस कर दोगे, बिकॉज दिस सर्कल इज इन बिटवीन ना. सो व्हाट यू विल बी डूइंग, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यू ऑल नो इट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ and area of circle is what? Pi r square. So it will be length into breadth 20 multiplied by 12 minus pi r square, it will be 22 by 7 multiplied by r, that will be 7 into 7. So 7 to 7 cancel, it will be 12 to ja 24, 240 minus 22 into 7, how much? 154. So just 40, 40, 86 centimeter square. So this is the area of the pink colored part, 86 centimeter square, that you need to find out. So this is how you have to think when you have to find the area, when you have to find the perimeter. ये चीज़ सोचनी है, डोंट कंफ्यूज इन दिस वन, है ना. एरिया कब फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर कब फाइंड आउट करना है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. ये जो क्वेश्चन है ना, DL एंड BM आर द हाइट्स ऑन साइड AB एंड AD रिस्पेक्टिवली ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD. देखो तुम्हारे पास एक फिगर दी हुई है ABCD 11.24, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में तुम देख सकते हो ये फिगर ABCD. तो करना क्या है इसमें, ABCD एक पैरेललोग्राम बना लो. सो लेट अस मेक अ पैरेललोग्राम.
सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, सेम जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है वही पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। ओके, दिस इज़ द पैरेललोग्राम। हम इसका नाम रख देते हैं जैसे टेक्स्ट बुक में है ABCD। ओके, ABCD हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया। उसके बाद इसमें दो हाइट्स हैं हमारे पास, DL एंड BM, तो हम वो भी बना लेते हैं। सबसे पहले इसका नाम रख देते हैं हम ABCD, और जो हमारी फर्स्ट हाइट है वो क्या है, DL। दिस इज़ द हाइट वी आर हैविंग। ओके, दिस इज़ द हाइट DL is the height, this perpendicular, and one more height is there, BM. So we will draw another height, this one. This is our height BM. So we will name it BM. Now just think, what is given in the question? If the area of the parallelogram is 1470 centimeter square, we are given with the area of the parallelogram. Area of parallelogram, it is already given to you, 1470 centimeter square. Okay, and then read it. AB is 35 centimeter and AD is 49 centimeter. AB 35 है, AD कितना है, 49. We have to find BM and DL. AB 35, AD 49. So we will write here, AB is given, AB 35, and the other one is AD is 49. So just see again, AB is 35, AD is 49. We have to find BM and DL. So this is our BM. This side you can see, this one is BM, this blue one, and DL. These we have to find. ये DL find out करना है, BM find out करना है, तो हम AD और उसको लिख देते हैं। देखो यहाँ पे चेक करो, हमारे पास AD कितना है, 49. सो आई विल राइट इट एज 49 सेंटीमीटर। सी दिस वन, ये पूरा A से लेके D तक, दिस वन इज 49 AD, एंड AB दिस वन, दिस इज 35. Okay, now come over to this question again. Area of parallelogram. What is the formula to find the area of parallelogram? It is base into height. So Yes, sir. if I will multiply base multiply its height, अगर मैं बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करूंगा, what I will get the area ना, and area is given to us, it is 1470. Now first take this base AB, पहले ना AB बेस ले लो. If you are taking this base AB, what is the height corresponding to this base? इस बेस के कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या हाइट है हमारे पास, AB के कॉरेस्पॉन्डेंस कौन से वाली हाइट है, what is the height? Is it DL? Yes, sir. DL. Yes, sir. Yes, it is DL 1470. देखो मैंने क्या लिखा, एरिया इज गिवन टू अस, एरिया हम लोगों को दिया हुआ है, इट इज 1470, एंड वी नो हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इनटू हाइट होता है, सो दैट मीन्स इट इज 1470. So AB and DL, AB if I am taking as base and DL as height, if I will multiply these two, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा इट विल बी 1470. नाउ वी नो AB हम लोगों को पता है इट इज़ 35. ओके, एंड DL वी हैव टू फाइंड आउट, DL फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट फाइंड DL, सो इट विल बी 1470. एंड इफ समथिंग इज इन मल्टीप्लीकेशन ऑन द लेफ्ट साइड, अगर यहाँ पे इट विल गो टू द डिवीजन ना, so it will be 1470 divided by 35. So now we will cancel it, 5 7 ja 35, 5 2 ja 10, then 4 7, 5 9 ja 45, then 2 0 5 4 ja, then 7 से cancel, 7 4 ja 28, 7 2 ja 14. So DL we are getting, DL कितना आ गया, DL is 42 centimeter.
है ना, इट इज इन सेंटीमीटर, क्योंकि कोई भी साइड मीटर या सेंटीमीटर में होती है. नाउ अगेन सी, अगेन आई एम डूइंग द सेम थिंग. अगेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगेन इट इज 1470. सो इफ आई एम टेकिंग इट base into height, base multiply by height, it is 1470. Okay, base into height I am taking as 1470. Now this time I am taking this one as base. कौन से वाला base ले रहा हूँ? AD. This side AD I am taking as base and height I am finding BM. Height is BM. So it will be 1470. क्योंकि देखो ना, अगर मैं बेस कौन से वाला ले रहा हूँ, इफ आई एम टेकिंग दिस बेस एज ए डी, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस बेस व्हाट इज द हाइट वी आर हैविंग, विच इज कोरेस्पॉन्डिंग हाइट, इट इज बी एम. So BM. base into, so it's this time AD is how much? AD is 49, we know. So we will take 49 multiply by BM equal to 1470. So now again it is in multiplication, it will go to division. So BM will be 1470 divided by 49. Cancel करेंगे, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 7 1 जा 0, then 7 1 जा 7 3 जा and 0. So it will be 30 centimeter. So this is what we have to do. DL हमने find out किया, कितना आया? 42 centimeter. BM we have find out कितना आया? It is 30 centimeter. By using the area of parallelogram formula, simple calculation you have to do. I am writing a question for you. Try to solve it. हाँ, और सब अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखना. We are having a rectangular park. This is a rectangular park we are having. A rectangular park. Rectangular park. Okay. And this rectangular park is having length. इस rectangular park की जो length है ना, that is 50 meter. And breadth is 40 meter. Okay, length is 50 meter and breadth is 40 meter. Now what is done, इसके ना यहाँ पे एक path बनाया, this path. This kind of path is made. ये जो है ना, यहाँ पे वॉकिंग के लिए होता है ना, यू मस्ट हैव सीन, जब तुम लोग पार्क में जाते हो तो पार्क में क्या होता है, जब तुम्हें वॉक करनी होती है ना, तो ऐसे साइड में क्या होता है, यहाँ पे चलने के लिए स्पेस होता है, ये वाला है ना, जिस पे लोग घूमते रहते हैं पैदल. दिस काइंड ऑफ पाथ, ओके, दैट रन्स अराउंड दिस वन सर्कुलर पार्क, इसकी बाउंड्रीज पे. सो अगर मैं तुम लोगों को बोलता हूँ, इफ आई एम सेइंग दैट the width of the path, the width of this path, जो ये हमारे पास path है ना, इसकी width बनाता हूँ मैं यहाँ पे. This one, this is the width, means इसकी चौड़ाई, how much wide it is. If it is 5 meter wide from all of its sides, हर जगह से 5 meter है, it is 5 meter, this one is also 5 meter. Okay, if all the path around this one is 5 meter, then what will be its area? What will be the area of the path? Area of path. What will be the area? Okay, now see, we need to find the area of the path on which we walk. This walking area, this one we have to find. जिस पे हम walk करते हैं ना, if I just give this one a color, this one, this is the walking area, this one where I will be walking, this yellow one. तो करना क्या है, just for an instant think, अगर हमारे पास ये अंदर वाला एरिया, सपोज दिस वन, ये अलग नहीं होता, सो इट इज़ ए कंप्लीट रेक्टेंगल ना, ये कंप्लीट रेक्टेंगल ए बी सी डी है ना. सो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी फाइंडिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी. ए बी सी डी का एरिया फाइंड आउट करूँगा मैं. सो हाउ आई विल बी फाइंडिंग इट, इट विल बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ ना. सो लेंथ इज व्हाट, लेंथ इज दिस 50 मीटर and breadth is how much, 40 meter. So it will be 50 multiplied by 40 and how much I am getting, 2000 2000. meter 2000 square. sir.
sir. 2000 मीटर स्क्वायर, करेक्ट. नाउ आई हैव टू सब्ट्रैक्ट, देखो क्योंकि मुझे सिर्फ येलो वाला एरिया चाहिए, आई विल बी वॉकिंग ऑन दिस एरिया ओनली, मैं सिर्फ इस वाले एरिया पे वॉक कर रहा हूँ. सो आई वॉन्ट दिस एरिया ओनली, दिस वन. सो दैट मीन्स वट, I will be subtracting this green part, this inside rectangle. Suppose I am naming it as P, Q, R, S. I will be finding the area of rectangle P, Q, R, S. P, Q, R, S. Now, how I will be finding for this P, Q, R, S? P, Q, R, S कैसे find out करूँगा मैं? See, सबसे पहले यहाँ पे देखो, this one is 40 मीटर, ये वाला complete कितना है? 40 मीटर, 40 है ना? दिस यू कैन सी BC, इट इज 40 मीटर. तो 40 में से 5 मीटर ऊपर माइनस हो जाएगा, दिस वन 5 मीटर, और 5 मीटर नीचे माइनस हो जाएगा. सो हाउ मच इनसाइड विल बी, हाउ मच इट विल 30 बी? मीटर. 30 मीटर, करेक्ट. एंड देन AB, इट इज 50 मीटर. तो 50 में से 5 मीटर इधर माइनस हो गया, 5 मीटर इधर माइनस हो गया. सो हाउ मच इट इज लेफ्ट? दिस वन 40 मीटर. 40 मीटर. सो एरिया ऑफ इनसाइड रेक्टेंगल, जो अंदर वाला रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना आया? इट विल बी 40 इंटू 30. सो दैट मीन्स 1200 मीटर स्क्वायर. सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ? एरिया ऑफ द पाथ दैट विल बी 2000 माइनस 1200 meter square. So it will be 800 meter square. So this is the area of the path we are having. So next question for you is, suppose we are having a rectangular park. Again I am having a rectangular park, this one. This is a rectangular park, suppose A, B, C, D. And it is having dimension 80 meter by 60 meter. Means the length is 80 meter and the breadth is 60 meter. Now you are having two cross road inside it. दो cross road हैं तुम्हारे पास इसके अंदर. Cross road means one road is like this one. Okay, this is the road you are having, and one road is this one. These are the two crossroads you are having inside the रेक्टेंगुलर पार्क. जो तुम वॉक करने वाले हो, अब इस पे वॉक करोगे, है ना. इट इज़ नॉट ऑन द बाउंड्री, इट इज, दीज आर द क्रॉस रोड, दीज आर कॉल्ड क्रॉस रोड्स. समझ आया? क्रॉस रोड्स. वाई वी से इट्स एज क्रॉस रोड्स? क्रॉस क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर क्रॉसिंग ईच अदर, है ना. तो इसलिए इसको क्रॉस रोड्स. हाँ, क्रॉस रोड्स. एंड सपोज दीज क्रॉस रोड्स आर 10 मीटर वाइड. जो ये क्रॉस रोड्स है ना, ये 10 मीटर वाइड है. इट इज़ 10 मीटर वाइड, and this one is also 10 meter wide. So if I have to find only the area of the crossroads, see this is the park. Suppose ये तो पार्क बच गया हमारे पास, जिसमें कुछ अच्छे से फ्लावर्स भी लगे हुए हैं. Suppose these are the flowers, है ना, like this. ये फ्लावर्स हैं पार्क में. Okay, but we are not going to pluck it, है ना. हम फ्लावर्स तोड़ने पार्क में नहीं आए हैं. वट वी आर गोइंग टू डू, वी विल बी वॉकिंग ऑन द क्रॉस रोड्स. हम क्रॉस रोड पे वॉक करेंगे. सो हाउ मच इज द एरिया ऑफ दिस क्रॉस रोड? इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द क्रॉस रोड, हाउ मच विल बी इट्स एरिया? एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स. क्रॉस रोड्स का एरिया फाइंड आउट करना है. टोटल एरिया कितना आएगा ये वाला? ट्राई टू फाइंड इट आउट. Now first thing, what shape this road is having? The road I have shaded, is it a rectangle? Yes, correct, it's a rectangle. So if I am finding the area of this road, if suppose I am naming it as P, Q, R, S, I am finding the area of this one, P, Q, R, S, this road. So area of P, Q, R, S. You know it is a rectangle, and how much length it is having? How much length this rectangle is having? 80. You can take it from above. ऊपर से देख सकते हो. This PQ. PQ is what? It is the length, and it is 80. And this PS, it is the breadth, 10. So 80 multiplied by 10. So how much you are getting? 800 meter square. Now come over to the another road. अब दूसरे रोड पे आते हैं.
सो दूसरा रोड कौन सा है? दिस वन. दिस इज द अनदर रोड वी आर हैविंग. So if I will be finding the area of this road, suppose I am naming it as WXYZ, WXYZ. So if I am finding area of WXYZ, how much it will be? It will be, how much is the length it is having? 10, and how much is the breadth it is having? 60. So 60 multiplied by 10. So how much we are getting? 600 meter square. 600 square. देखो हमने ना दोनों एरिया फाइंड आउट किए. वी हैव फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रोड PQRS, वी हैव फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रोड WXYZ, बट वन प्रॉब्लम इज देयर. वन एरिया इट इज रिपीटिंग. ये वाला जो एरिया है ना बीच वाला, दिस एरिया आई एम टॉकिंग अबाउट, इट इज गेटिंग रिपीटेड. ये जब हमने फर्स्ट वाला फाइंड आउट किया उसमें भी इंक्लूड हुआ, जब हमने सेकंड वाला फाइंड आउट किया तब भी इंक्लूड हो रहे हैं. Isn't it? It is getting repeated ना, this one, this yellow one. So we will find Yes, this sir. one. हम इसको find out करेंगे. M N Q, sorry, T M N T S. This one, M N T S. M N T, M N S T. हम ये वाला find out करेंगे, ठीक है. तो इस M N S T को अगर तुम find out करोगे, how much it will be? देखो it is 10, it is 10. Isn't it a shape of a square? ये एक square ही तो है. So area of MNST, it will be 10 into 10. Why it is 10 into 10? Because area of square तुम लोगों को पता है it is side into side. So how much we are getting? 100 meter square. So total area of road, total area of road, how much will be the total area of the road? It will be 800 for the first one. देखो ये वाला जब फाइंड आउट किया था it is 800 plus 600 for the second one and minus 100. ये वाला एक बार माइनस करना पड़ेगा, minus 100. Why we are subtracting? Because it is included 2 times. वो 2 बार include हुआ है. So 1400 minus 100, it will be 1300 meter square. So this is the answer. You all have given correct answer. Now we are having one topic, that is conversion of units. Conversion of units. ये वाला टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. अच्छा एक चीज़ तुमने सोचा है, if we are having 1 meter, then in centimeter how much we write it? 1 meter, we write it as 100 centimeter, no? Correct. But if you are having, suppose you are having 1 meter square, then how much centimeter square you will be writing it? If 1 meter square is there, then how much centimeter square you will be writing? 200. No, it will be 10,000. अब why it is 10,000? देखो ये चीज़ समझो अब. If we are having 1 meter, I am writing it as 100 centimeter. ये तुम्हें बेसिक पता है, you know it. Yes, sir. If we are having 1 into 1, if we have to find the square of anything, अगर हम square find out करते हैं, suppose I have to find the square of 2. 2 का square find out करना है. What I will be doing? 2 multiply 2 ना? I will be multiplying it ना? So the same thing is here. If 1 meter is 100 centimeter, then 1 meter square, that means I am multiplying it 1 into 1. So this side also I will be multiplying na, 100 into 100. So it will be how much? 10,000 centimeter square, है ना. Suppose एक और लेते हैं. If 1 kilometer, how many meter is having 1 kilometer? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? It is 1000 meter, correct? So how 1 kilometer square will be equal to how many meter square? I will be doing what? Again multiplying 1000 by 1000. So it will be 0, 0, 0, 0, 0, 0 and 1, है ना. So 1 lakh. 10 lakh, 1 10 lakh meter square. 1 lakh 10 meter square. It will be 10 lakh meter square, है ना. So this is how you will be finding the units in square. अगर square में units है ना, if you are having units in square,
देन यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट, तब भी तुम लोग कन्वर्ट कर सकते हो, वेरी इजली यू कैन कन्वर्ट. सी सपोज आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन. देखो अगर तुम्हारे पास आता है that you are having 7 meter square and you have to convert it into centimeter square. 7 meter square को centimeter square में, so how much it will be? अभी हमने किया था 1 meter square is equal to how many centimeter square? 70,000 sir. centimeter square. Yes, so we will be multiplying it with 7 multiplied by 10,000, so it will be 70,000 70,000. centimeter square. So you should know that if you have to find from meter square to centimeter square, you have to multiply by 10,000. If kilometer square to meter square, see, simply you are going to do what? You are going to do the square of both sides. तुम लोगों को अच्छे से पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, दोनों साइड स्केयर कर दो. यू नो 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मच? इट इज़ 1000 मीटर. अगेन यू कैन स्केयर बोथ साइड्स, है ना. सो दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट. अच्छा, एक और यूनिट हम लोगों के पास आती है, इट इज हेक्टेयर. 1 हेक्टेयर. इफ समवन आस्क यू इन 1 हेक्टेयर हाउ मेनी मीटर स्क्वेयर्स आर देयर? एक हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वेयर होते हैं? in 1 hectare, if you have to find ना, it is 10,000 meter square. 10,000 meter square को हम क्या बोलते हैं? 1 hectare. and hectare is the unit to measure what? क्या measure करते हैं हम इस hectare में? we use this unit to measure the land. जब हम land measure करते हैं ना, like how many hectare a farmer is having, कितनी ज़मीन है किसी फार्मर के पास, तो दिस इज द यूनिट वी यूज, है ना, 1 हेक्टेयर. एंड इट इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वेयर. 10,000 मीटर स्क्वेयर के इक्वल होता है 1 हेक्टेयर. एक फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को बताया था याद करने के लिए. कल हम दोबारा मिलेंगे डांस क्लास में, है ना. इट इज मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, hecameter, kilometer. So if we are multiplying kilometer to meter, if we are going kilometer to meter, see, I am going from left to right. So left to right I will be doing what? Multiply, है ना. I will be multiplying. If I am going from left to right, that means how many steps I am going? 1, 2, 3. So from kilometer to meter I will be multiplying with 1000 because 3 steps I am going. If I am going from meter to centimeter, suppose I am going from meter, I want that in 1 meter how many centimeters are there? I will be going 1, 2. I am again going to the right side. So left to right again it will be multiply, so 100 centimeter. But सपोज 1 क्वेश्चन इज देयर इन 1 सेंटीमीटर. अगर ये क्वेश्चन आता है 1 सेंटीमीटर हाउ मेनी किलोमीटर्स आर देयर? 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? दैट मीन्स आई एम गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. सी 1, 2, 3, 4, 5. आई एम मूविंग 5 स्टेप्स, सो आई विल बी टेकिंग 10,000. 1 divided by 10,000. 1 lakh बेटा. I am coming 5 steps na, so 5 zeros I have to take, so it will be 1 lakh. 1 by 1 lakh. That means if going from left to right multiply, right to left divide. उसको तुम्हें कन्वर्ट करना है. सपोज यू नीड टू कन्वर्ट इट. जैसे हमारे पास ये वाला है, देखो मैं करता हूँ 1 सेंटीमीटर में हाउ मेनी मीटर्स आर देयर? 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? सी आई एम गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 1, 2. So I will be writing here 1 by 100 ना. Suppose 1 centimeter square में ये पूछा how many meter square are there. So what I will be doing? Squaring ना. देखो 1 का स्क्वायर करने पे तो 1 ही आता है और 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? It will be 10,000. So 1 centimeter square 1 by 10,000 meter square. That's it.